friends, today once again we would like to think about the mainstream study, that means chapter number 6, electromagnetic induction, part 5th. In the last session, that means if you consider 4 parts, then in 4 parts we have covered Faraday's law, application of Faraday's law, then you know that motional EMF, and most time big questions associated with motional EMF, NCRT, JEE NEET. So friends, today we would like to think about the next topic. Very important, it is induction. A very important word. You can say, if you consider this chapter number 6, then these 3 topics very important, particularly for JEE NEET point of view. Number 1, Faraday's law and its application. Number 2, very IMP, motional EMF. एंड नंबर 3, इंडक्शन. बट तीनों में सबसे जबरदस्त कोई धूम मचाता है तो इंडक्शन. सो वेरी IMP, you know that very well. What do you mean by induction? Already we have used here electromagnetic induction. If you change the magnetic flux, then electricity get induced. This is called simply induction process. Here induction, that means EMF get induced because of change in magnetic field. You know that anything get induced, it is called simply the induction process. So first of all, there are 2 types of inductions. Number 1, EMI, it is called mutual induction. So today we would like to start this lecture with this induction, mutual induction. What happened in mutual induction? So before moving towards the mutual induction, once again, what is the theme of this chapter? Very easy. What is the basic theme of this chapter number 6? Whatever the magnetic flux associated with any coil or closed circuit, if you change the magnetic flux associated with any coil, then what happens? Because of change in magnetic flux, EMF get induced. Because of induced EMF, induced current, induced charge, power, you know that we have discussed these all points. So once again, to produce induced EMF, to get, you can see that idea about the induced current, induced charge, first of all we have to think about the change in magnetic flux. But it can be possible because of these 2 types of coils also. How can you say? Just concentration required. This is coil number 1 and this is coil number 2. म्यूचुअल इंडक्शन का मैं एक ही मतलब निकालता हूँ कि आप स्कूल पे नाश्ता का डब्बा लेके जाते हो और आप नाश्ता लेके जाओ और कोई दूसरा उड़ाए, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. कभी कभार उल्टा हो जाता है, कोई दूसरा नाश्ता लेके आए और हम उड़ाए, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. Concentration here. This is, you can see that coil number 1 and current I is already passing through this coil number 1. If you pass current through this coil number 1, so now coil number 1 becomes a current carrying coil. Obviously, if you pass current through this coil number 1, magnetic field is produced. Because of magnetic field, you know that magnetic field lines, and these magnetic field lines associated with this coil number 1, this bunch of magnetic field lines called magnetic flux. But you can see second coil is very close to first coil. Because of very closed coil, or because these 2 coils are very close to each other, whatever the magnetic field lines associated with the coil number 1, these magnetic field lines can also associated with, you can see that, coil number 2, like in this way, you can see. So let magnetic flux associated with this coil number 1 now associated with coil number 2. So what is the current passing through coil number 1? I1 amount of current is passing through coil number 1. If you pass current through coil number 1 and magnetic flux associated with coil number 2, let magnetic flux associated with coil number 2, it is phi 2. You know that very well, phi 2 representing second coil. So now tell me, I would like to produce induced EMF in this second coil. What I have to do? We would like to obtain induced EMF in this second coil. What we have to do? Obviously, we have to change the magnetic flux associated with this second coil. But how can you change the magnetic flux associated with the second coil? Obviously, by changing current passing through the first coil. If you change the value of current passing through this first coil, what happens?
If you change the value of current, whatever the magnetic field lines associated or magnetic flux associated with coil number 1 changes, so obviously magnetic flux 2 also changes. In short, if you change the current in coil number 1, here magnetic flux associated with the second coil also changes, and change in magnetic flux as per Faraday's law, you know that very well. If you change the magnetic flux, then induced EMF get produced. So here, if you change the current passing through first coil, what happens? Magnetic flux associated with the second coil already changes, and change in magnetic flux give induced EMF in second coil. तो देखो सेकंड कोयल के साथ कोई सोर्स नहीं था, फिर भी सेकंड कोयल में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया because of change in current passing through first coil. This is called simply the mutual induction. This is the mutual inductance, or I can say this process of producing induced EMF because of the system of two coils. It is called the mutual induction. अभी induction word में अपन लोग जाते हैं, don't worry. Here you can see that in the second coil induced EMF is produced, but because of the current passing through first coil. Whatever the current passing through first coil, if you change the current passing through first coil, automatically magnetic flux associated with the second coil changes, and change in magnetic flux gives idea about induced EMF. So here in the second coil, EMF get induced because of change in current through first coil. So this is called, this entire phenomenon is called mutual induction. Okay, इस second coil में फर्स्ट कोयल में से करंट जो पास हो रहा है उसको चेंज करके सेकंड कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने की ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन. व्हाई वी हैव टू यूज वर्ड म्यूचुअल? बिकॉज़ हियर टू coils are associated with each other. Okay friends, so one point is clear. Whatever the magnetic flux associated with the second coil, it totally depends upon current passing through first coil. So I can write magnetic flux phi 2 is directly proportional to I1. You can see magnetic flux associated with the second coil is directly proportional to current passing through first coil. So if there are n number of turns associated with this coil number 2, there are total n number of turns. So what is the total flux? Then I can write n phi 2. So total flux now directly proportional to current I1. This total flux, this is called simply the flux linkage. From today, this total flux is called flux linkage. You can also use word, don't worry, the total flux associated with the coil number 2 is directly proportional to the current passing through coil number 1. Now if you remove this proportionality sign, then there is constant, and this constant is called M21. This is called M21. What do you mean by this M21? It is called mutual induction. देखो ये most important word. There is induction. This M21 is called mutual inductance. देखो ये inductance, while here induction, inductance. This entire process of producing induced EMF because of the system of two coils, it is called mutual induction, and this constant, it is called mutual inductance of a system of two coils. You can see most IMP. But what do you mean by M21? M21 representing the mutual inductance of coil number 2 with respect to coil number 1. You can see, you can write two different, you can see the statement number 1. M21 का मतलब होता है mutual inductance of the system of two coils. M21 is also called mutual inductance of coil 2, but with respect to 1. Why with respect to 1? Because here induced EMF is produced in second coil while current passing through first coil. If you consider opposite process, then what happens? If current passing through second coil and magnetic flux associated with the first coil, and if you pass, suppose I2 amount of current is passing through the second coil, and phi 1 amount of flux is associated with the first coil, then phi 1 is directly proportional to I2. Suppose there are n number of turns in this coil number 1, so n phi 1, and if you remove this proportionality sign, then it is M12 I2. So what do you mean by this M12? It is called mutual inductance.
Don't say induction. This is called mutual inductance of the system of two coils, or mutual inductance of coil number 1 with respect to coil number 2. Very IMP. Don't forget. So it is not, we can say that necessary that always current passing through first coil and EMF get induced in second coil. You can also think about opposite process. If you pass current through second coil, then you can obtain magnetic flux in first coil. So very interesting point. So from this equation, if you write M21 in the form of subject, then this is, you can see that the formula for mutual inductance. Most IMP, this is called mutual inductance. It is also called coefficient of mutual inductance. Superb. So this mutual inductance gives idea about which point? This quantity mutual inductance simply provide information. You can see, what do you mean by N phi 2? N phi 2 simply the total magnetic flux associated with the second coil, and I1 is the current passing through first coil. That means the amount of magnetic flux associated with the second coil per unit current passing through first coil, it gives idea about mutual inductance of the system of two coils. Very IMP. This is the first definition of the mutual inductance. Once again, ये दो definitions बोर्ड में पूछे हुए हैं. Most IMP give two definitions of mutual inductance. Number 1, what do you mean by mutual inductance of the system of two coils? The mutual inductance of the system of two coils, that means the magnetic flux, total magnetic flux associated with any one coil per unit current passing through other coil. One or other अपन लोग यूज कर सकते हैं, one और two के बदले any one coil per unit current passing through other coil. So magnetic flux associated with any coil of the system of two coils per unit current passing through other coil, it is called system or mutual inductance of the system of two coils. Superb. So this is the very IMP point. But we can also think about few more important points about this mutual inductance. कोई बोले सर इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दिख नहीं रहा, तो अपन लोग अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में जाते हैं. ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूँ. Now you can see there is one equation with you. Now if you take differentiation of this equation on both sides, then what happen? So n constant differentiation d phi 2 by dt, M21 constant differentiation di1 by dt. You can see by taking differentiation on both sides with respect to time. Why with respect to time? Because you can see only these two quantities, number 1 current and number 2 flux. These two quantities only you can see that get affected with respect to time. फर्स्ट कोयल में से जो करंट पास हो रहा है वो चेंज होगा, टाइम के साथ करंट चेंज करो तो ये जो सेकंड कोयल है उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो चेंज होगा. सो हियर डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड करंट, because these two quantities already you can see that get changed with current, sorry, time. That's why. So now as per Faraday's law, you know that very well, induced EMF is equal to minus n d phi by dt. This is your Faraday's law. याद करो पहला लेक्चर. This is the mathematical form of Faraday's law. Epsilon is equal to minus n d phi by dt. You can see. And now here n d phi 2 by dt, that means we can use here d phi 2 by dt. So here epsilon 2 कर देता हूँ. So instead of this portion, I can use minus epsilon 2 क्योंकि इधर माइनस नहीं है. Don't worry. तो n d phi 2 by dt की जगह minus epsilon 2, it is m21 di1 by dt. In short, epsilon 2 is equal to minus m21 di1 by dt. This is the धूम इक्वेशन. ये दो ही इक्वेशन है वो धूम बचाने वाले हैं, number 1 and number 2. You can see from this first equation already we have discussed or we have defined mutual inductance. What is the mutual inductance of the system of two coils? Mutual inductance of the system of two coils is nothing but it is simply the total magnetic flux associated with any coil of the system of two coils per unit current passing through other coil. And now from this equation, what do you mean by epsilon 2? It is called induced EMF. ये second coil में
फर्स्ट कोइल में से जो करंट पास हो रहा है अगर वो चेंज होगा टाइम के साथ तो सेकंड कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, सेकंड कोइल का फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड कोइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन 2, सो यू कैन सी दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन कोइल नंबर 2। तो इसके ऊपर से मैं M21 को सब्जेक्ट फॉर्म में लाऊं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ M21? इट इज एप्सिलॉन 2 upon di by dt. Minus sign simply representing Lenz's law. It gives just opposite direction, don't worry. Okay, so that's why we have neglected minus sign. So what is the formula of M21? It is epsilon 2 upon di 1 by dt. तीनों का मतलब समझ लो। M21 mutual inductance of the system of two coils, epsilon 2 induced EMF produced in second coil, di 1 by dt. It is called the rate of change of current. But one, that means rate of change of current passing through first coil. So what is the definition of mutual inductance? This is the second definition. First definition already we have defined by using this equation number 1. Now second definition, concentration required. The mutual inductance of the system of two coils. Mutual inductance of the system of two coils is nothing but it is simply the induced EMF produced in any one coil. Induced EMF is produced in any one coil per unit rate of change of current in other coil. Induced EMF produced in any one coil per unit rate of change of current in other coil. It is called the mutual inductance of the system of two coils. सुपर, ये दो इक्वेशंस के ऊपर से दो डेफिनेशंस, ये दोनों डेफिनेशंस बोर्ड में पूछ चुके हैं। अपन लोग पूरा सिस्टम वापस डिस्कस करते हैं। ये मैंने म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फंडा बताया। अब वापस सब कुछ ए टू जेड समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने चिल्ला चिल्ला के एक ज नारा लगाया है, क्या? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। और वो नारा है वो देने वाला बंदा था फेराडे। फेराडे चिल्ला चिल्ला के कह के गया क्या कि कोई भी कोइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो उसको चेंज करो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पाओगे। then induced EMF get induced, or I can say that get produced. And this process of producing induced EMF due to change in magnetic flux, it is called simply the induction. अपन लोग को इंडक्शन के दो टाइप डिस्कस करने हैं, उसमें से पहला टाइप अपन लोग अभी शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन दैट मींस we have to think about a system of two coils. Just check this diagram. This is coil number 1. Very close to this coil number 1, there is coil number 2. These two coils are placed very close to each other. Don't forget. Why we will discuss. Now, coil number 1, current passing through this coil number 1, it is I1. I1 amount of current is passing through coil number 1, and because of this current passing through coil number 1, there is some magnetic field. Because of magnetic field lines, and this magnetic field lines also associated with second coil. In short, if you pass current through first coil, if I1 amount of current is passing through first coil, then phi2 amount of magnetic flux associated with the second coil. सेकंड कोइल के साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, फिर भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हुआ because of this coil number 1. So there are, we can say, the 2 points: current passing through first coil and magnetic flux associated with the second coil. What is the current passing through first coil? I1. And what is the magnetic flux associated with second coil? Phi2. Okay. So this is the phi2 is the magnetic flux only and only with one turn. If you consider n number of turns in the second coil, then total flux associated with the second coil, it is n phi2. It is called flux linkage or total flux associated with the second coil. Okay friends, you can see this flux associated with the second coil totally depends upon current passing through first coil. If you change the value of current passing through first coil, automatically flux associated with the second coil changes, and Faraday का नारा आ गया, change in magnetic flux induced EMF. तो अगर इस फर्स्ट कोइल का करंट चेंज होगा तो सेकंड कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और सेकंड कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकंड कोइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नहीं, दो बंदे मिलके म्यूचुअल इंडक्शन थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वर्ड आया म्यूचुअल।
म्यूचुअल इंडक्शन का वेरी इजी मतलब मैंने बोला, कोई और स्कूल में नाश्ता लेके आए और हम उड़ाए, कोई और स्कूल में नाश्ता लेके आए और हम उड़ाए, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नाश्ता लेके आता ये है, उड़ाता ये है, यू कैन सी। ओके फ्रेंड्स, सो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सेकंड क्वालिटी is N/2, मगर ये पूरा फ्लक्स है वो करंट के मुताबिक चेंज हो रहा है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल is directly proportional to current I1. Okay, so if you remove this proportionality sign, then it is called M21, and this proportionality constant, it is called mutual inductance. Here induction, here inductance, टन्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। आज से ये फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके लाइफ में धूम मचाने वाली है, एजुकेशनल लाइफ, डोंट वरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस M21 is called mutual inductance of the system of two coils. So M21, if you consider in the form of subject form, so M21 is equal to N/2 upon I1. तो इसके ऊपर से पहली डेफिनेशन बनाते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 2 with respect to 1, or mutual inductance of the system of two coils is nothing but it is simply equal to, mutual inductance of the system of two coils is equal to total magnetic flux associated with any coil, total magnetic flux associated with any coil per unit current passing through other coil. इधर 1 और 2 नहीं लिखेंगे, any one coil per unit current other coil. It is called mutual inductance of the system of two coils. Now we have idea, if you change the magnetic flux then induced EMF, तो अपन लोग अब इसमें induced EMF का फॉर्मूला, it is called mutual induced EMF. तो mutual induced EMF फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन का अपन लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन, by taking differentiation of this equation with respect to time. Why? Because here two quantities continuously changes with respect to time. Number one, current passing through coil number 1 and flux associated with coil number 2. So that's why by taking differentiation here, n constant, differentiation of flux with respect to time, mutual inductance constant, di1/dt. So as per Faraday's law, you know that very well, n d∅2/dt, that means it is epsilon 2, बट ये माइनस, तो इसकी जगह मैं माइनस एप्सिलॉन 2 रख देता हूँ क्योंकि इधर माइनस नहीं था। सो ये माइनस इधर दे दे, सो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू M21 di1/dt. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना फ्लक्स एसोसिएट होगा, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकंड कॉइल में, और सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन आप देख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सुपर। इसके ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ। सो व्हाट इज द फार्मूला, एप्सिलॉन 2 अपॉन di1/dt. दिस इज कॉल्ड अनदर फार्मूला। इसके ऊपर से डेफिनेशन देते हैं, ये दो डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है। नंबर 1, दोनों डेफिनेशन देखो। नंबर 1, ये दो फार्मूले आ जाए मतलब पूरा रट्टेबाजी जरा भी नहीं। नंबर 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स is nothing but it is equal to, mutual inductance of the system of two coils is total magnetic flux associated with any one coil per unit current passing through other coil. While here mutual inductance of the system of two coils is equal to induced EMF producing any one coil per unit rate of change of current. Induced EMF produced in any one coil per unit rate of change of current, it is called the mutual inductance of the system of two coils. Most IMP, तो ये भी important point। दूसरा अपन लोग इसके ऊपर से दूसरी इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं, ये जो सेकंड कॉइल है उसके साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा पर 1 एम्पियर करंट, पर यूनिट करंट, उसका ब्यौरा मिल सकता है। और सेकंड कॉइल में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है अगर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट, यानी 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट चेंज होता हो तो इधर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका ब्यौरा ये बंदा देता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। द वेरी आईएमपी, कीप इन माइंड फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स। नंबर 1 यू कैन सी दैट फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स। आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना जिसे कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा। नंबर 2 यू कैन सी हियर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड।
ये दोनों कोइल्स का जो कॉमन एरिया है, ये देखो इधर मैंने बताया है, ये कोइल नंबर 1 का एरिया है, ये कोइल नंबर 2 का है। जनरली जिसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही लिया जाता है। तो ये कॉमन एरिया जितना ज्यादा हो उतना जिसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, उतना जिसे कह सकते हैं कि आप जानते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ मोस्ट टाइम के, इसके ऊपर से एमसीक्यू बने हैं। नंबर 3, नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 2 कॉमन एरिया, and number 3 now most time the orientation, relative orientation of these two coils. How can you arrange these two coils such that maximum induced EMF or maximum flux associated with the second coil? अब देखो ये बाजू बाजू में है, अब कोई छगन इस तरह ड्रॉ करे, ऐसा ये इधर है और इधर, फिर इधर बोले क्यों इंड्यूस्ड EMF, इट इज नॉट पॉसिबल। सपोज कोई इस तरह करता है और दूसरा कोई इधर रखता है, सो नॉट पॉसिबल। इट इज यू कैन सी दैट फ्लक्स रिमेन कॉमन, तो उसके लिए नजदीक होना चाहिए। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड नंबर 2 डिस्टेंस, यू कैन सी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी बाजू बाजू होना चाहिए, रिलेटिव ओरिएंटेशन रॉन्ग है। और डिस्टेंस, इफ दिस बोथ कॉइल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन फ्लक्स नंबर 1 doesn't associated with the second number coil. So these are the few factors. Also permeability of this material. ये सेकंड कॉइल को अगर आप आयरन रोड के ऊपर अरेंज करते हो या गूंद करते हो तो और मैग्नेटिज्म ज्यादा मिले। तो ये सब फैक्टर से पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज कॉमन एरिया, देन रिलेटिव ओरिएंटेशन, you know that relative separation, and permeability of the magnetic material on which this type of second coil is wound, you can see. So these all points are very IMP. This is the, you can see that the A to Z of mutual induction. Once again, in the case of mutual induction, only one question very IMP. It is called give two definitions of mutual inductance. तो ये दोनों फॉर्मूला है, उसके ऊपर से म्यूचुअल इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन पूछेंगे मोस्ट आईएमपी। इसके यूनिट के बारे में अपन लोग बाद में डिस्कस करते हैं, एक और टॉपिक आएगा तब। यू कैन सी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन whenever two coils are arranged very close, and if you change the current passing through any one coil but the EMF get induced in the other coil, this entire process is called mutual induction, and this quantity it is called mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर से क्या पता चल सकता है? नंबर 1, सेकंड कॉइल के साथ कितना फ्लक्स जुड़ेगा पर यूनिट एम्पियर और पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। सेकंड कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर एक सेकंड में कितना करंट चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता लगाया जा सकता है। दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी आईएमपी। बोर्ड में इसमें पूछने से ज्यादा कोई चांसेस नहीं है सिवाय एक मोस्ट आईएमपी थियरी, गिव टू डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये पूछेंगे। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी धूम मचाते हैं, तो अपन लोग अभी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। Okay friends, so now we would like to think about few most important numericals. तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ, because now we would like to think about basic concept clearance के बाद न्यूमेरिकल। इसके 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। Okay friends, once again, what do you mean by mutual inductance? Mutual inductance की दो definition याद करो। Number 1, mutual inductance, that means magnetic flux associated with any one coil of the system of two coils per unit current. And number 2, you know that very well, magnetic flux, induced EMF produced in second coil per unit rate of change of current. Now concentration required, you can see there are two coils I have represented. They both are concentric, large common area, दोनों का एरिया कॉमन है, ऑलमोस्ट ये इतना ऑलमोस्ट सेम कंसीडर करना है। तो मैं दोनों का क्रॉस सेक्शन रेडियस बता देता हूँ। जो ब्लैक कलर है उसका रेडियस R1 है, और जो रेड कलर है कोई, उसका रेडियस अपन लोग लेते हैं R2। चलो, सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव रिटन coil 1, ब्लैक कलर coil 1, रेड कलर coil 2।
This coil can also be called solenoid. This is solenoid number 1. रेड कलर कोयल इज कॉल्ड सोलेनोइड नंबर 2 S2. अब अपन लोग टर्न बाय टर्न दोनों केसेस चेक करते हैं. आप जो बोलो उससे शुरू करें. चलो कोई बोले कि कोयल नंबर 1 में से करंट पास करो, तो वहां से शुरू करते हैं. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. सो केस नंबर 1. व्हाट इज केस नंबर 1? करंट इज पासिंग थ्रू solenoid number 1. Let the current passing through solenoid number 1 is I1. तो ब्लैक कलर है, उसमें से देखो करंट पास करवाते हैं. ये रहा ब्लैक कलर, उसमें से I1 करंट पास होता है. रेडी? सो इफ यू पास करंट थ्रू solenoid number 1, it is already I1. What happen? Obviously magnetic field. That means magnetic field lines. But this magnetic field lines of coil number 1 also associated with coil number 2 because they both are concentric and very close to each other. So obviously if you pass current through solenoid number 1, then what is the magnetic flux? Magnetic flux associated with solenoid number 2, it is phi 2. Okay, but suppose there are n2 number of turns in coil number 2. कोयल नंबर 2 में नंबर ऑफ टर्न्स है n2 एंड कोयल नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्न्स है n1. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोथ सोलेनॉइड स्मॉल l, कॉमन लेंथ होगी, यू कैन सी. ओके फ्रेंड्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स तो अपन लोग जानते हैं n2 है. सो एक टर्न के साथ phi 2. सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलेनॉइड नंबर 2? इट इज n2 phi 2. होगा इतना. एक जो ये रेड कलर एक टर्न होगा तो phi 2, मगर ऐसे रेड कलर के कितने नंबर ऑफ टर्न से टोटल n2, तो टोटल फ्लक्स होगा n2 phi 2. बट नाउ यू नो दैट वेरी वेल, व्हाटएवर द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी n2 phi 2 associated with this coil number 2 or solenoid number 2, it totally depends upon current passing through solenoid number 1. ये जो ब्लैक कलर का सोलेनोइड है उसमें से जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको चेंज करना शुरू करो तो करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. उसके कारण ये जो सोलेनोइड नंबर 2 है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF. तो सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा, मगर अपने को तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स फाइंड करना है. तो अपन लोग एक कदम आगे बढ़े. हियर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल यानी कि n2 phi 2 इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल और नॉट. ये जो सेकंड कॉइल के साथ जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा उसका सारा दारोमदार ये करंट I1 पे है. अगर I1 चेंज होगा तो n2 phi 2 चेंज हो जाए, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन देन देयर इज कांस्टेंट M21 I1. व्हाट डू यू मीन बाय M21? करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल, एंड दिस M21 it is called where M21 it is called mutual inductance. Inductance of system of two solenoids or two coils. कोई बोले अच्छी तरह लिखो तो एक और अच्छी तरह लिख सकते. It is also called mutual inductance of solenoid number 2 with respect to solenoid number 1. ऐसा भी कह सकते. डोंट वरी. चलो अब इसमें आगे बढ़ते. N2 रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. जबकि सोलेनोइड है तो उसमें अपन लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताते हैं. पर्टिकुलरली फॉर सोलेनोइड वी हैव टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो मैं इधर स्मॉल n1 कर देता हूँ. स्मॉल n1 दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलेनोइड नंबर 1 एंड स्मॉल n2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलेनोइड नंबर 2. तो व्हाट इज द वी कैन से दैट formula for total number of turns per unit length. Number of turns per unit length that means total number of turns upon length. तो इसके ऊपर से total number of turns का फॉर्मूला होगा NL. देखो ये रेडी. तो अपन लोग देखो इधर अब इसमें वैल्यू रखते N2. What do you mean by N2? N2 is the total number of turns associated with solenoid number 2. तो solenoid number 2 के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं M2L. देखो as per this equation N2. What do you mean by N2? Number of turns of second coil but per unit length. Okay. Into L आगे देखो इसका. Then multiply by phi 2. Phi 2 is the flux.
What do you mean by phi 2? Phi 2 is the magnetic flux associated with second coil. What is the general formula of magnetic flux? एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी जगह अपन लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड कॉइल A2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड. देखो ये चिकना केस म्यूचुअल इंडक्शन में लोगों को हैरान परेशान सिर्फ एक ज बंदा करता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड. इधर है 2 मगर आया 1. क्यों? क्योंकि सेकंड कॉइल है उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, वो एसोसिएट होता है. वर्डिंग पकड़ना बराबर. सेकंड कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस करता कौन है? कॉइल नंबर 1. इसीलिए B1 सुपर ये याद रखना है इज इक्वल टू M21 इंटू I1. चेक करते जाना आप. सो N2L A2 का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इफ रेडियस इज R2, so I can write pi R2 square. Area of cross section for circle or circular path or circular cross section. B1. What is the formula of magnetic field inside very long solenoid? ये जो फर्स्ट सोलेनोइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड? म्यू नॉट Ni. चैप्टर नंबर 4 धूम मचा रहा है. सो इधर आएगा म्यू नॉट. अपन लोग सोल्व कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनोइड. तो नंबर ऑफ टर्न्स उसका आएगा N1 और करंट है I1. सो M21 I1. सो दिस इज एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड कॉइल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल और सेकंड सोलेनोइड. अब देखो I1 कैंसिल, तो मैं डायरेक्टली M21 लिखूं. सो व्हाट इज द M21? M21 that means the mutual inductance of the solenoid number 2 with respect to solenoid number 1. तो लिख के देखो, मैं सबसे पहले म्यू नॉट then pi then R2 square then N1 N2 you can see into L. This is your mutual inductance of the system of two coils in which circumstances when current is passing through solenoid number 1 and magnetic flux associated with solenoid number 2. अब कोई बोले इससे उल्टा करो सर, तो अब इससे उल्टा देखते हैं. नाउ द सेकंड केस नंबर 2. करंट पास करेंगे इफ करंट इज पासिंग थ्रू सोलेनोइड नंबर 2. नाउ इंस्टेड ऑफ सोलेनोइड नंबर 1 नाउ करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड नंबर 2 इट इज I2. यानी बिल्कुल अब इससे ऑपोजिट सोचना है. अब ये रेड कलर का जो सोलेनोइड है उसमें से करंट पास करते हैं, उसमें से जो करंट पास होगा तो वो I2 होगा, क्योंकि सेकंड है तो उसका अपन लोग कर देते हैं I2. देखो इधर I2. तो करंट पासिंग थ्रू सेकंड सोलेनोइड. So magnetic field is produced, but this magnetic field also associated with first solenoid. So now next point, magnetic flux associated with first solenoid. It is N1 phi1 like N2 phi2. Phi1 नहीं बोलना, N1 phi1. Phi1 is the flux with only one turn. ये जो ब्लैक कलर का एक टर्न उसका फ्लक्स phi1. ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने ब्लैक कलर के लिए N1. सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलेनोइड नंबर 1 इट इज N1 phi1. मगर अब N1 phi1 है, यानी ये जो ब्लैक कलर के साथ जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा उसका सारा दारोमदारी I2 के ऊपर होगा, क्योंकि जैसे ही आउटर सोलेनोइड में से अगर I2 चेंज होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट सोलेनोइड का भी फ्लक्स चेंज होगा. तो अब अपन लोग एक कदम आगे. हियर N1 phi1 is directly proportional to I2. Sorry, there is a mistake. I2 you can see. बिल्कुल ऊपर देखो, इधर है टोटल ऑपोजिट प्रोसेस. तो अब शुरू करते हैं. इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो कांस्टेंट बनेगा M12. व्हाट डू यू मीन बाय M12? M12 का मतलब होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड नंबर 1 with respect to solenoid number 2. You can see इधर था mutual inductance of solenoid number 2 with respect to solenoid number 1. Here mutual inductance of solenoid number 1 with respect to 2, क्योंकि फ्लक्स जिसके साथ एसोसिएट हो उसका mutual inductance. तो N1 की जगह वो अपन लोग लिखते N1L, क्योंकि फर्स्ट कॉइल है या सोलेनोइड नंबर 1 है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1. सो ये इक्वेशन अप्लाई किया. देखो कैपिटल N1 से स्मॉल N1 है.
फाई वन का फॉर्मूला होगा A1, ये चिकना केस मोस्ट आईएमपी। इसमें फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है फर्स्ट के साथ, तो इसका एरिया होगा A1, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सेकंड कोइल। देखा इधर फाई 2 के साथ एरिया A2, मगर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट प्रोड्यूस कर रहा था। इधर पोलैरिटी उल्टी हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट here, magnetic flux no doubt associated with first coil, but it is produced by second coil. So phi 2 is sorry phi 1 is equal to A1 into B2 M1 to I2। चलो N1 की जगह N1, L की जगह A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बोला ऑलमोस्ट कॉमन, तो R1 लिखूं या R2 स्क्वायर, दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इधर R2 की जगह R2 कर देता हूँ। ये कॉमन पॉइंट याद रखना है। और अब B2 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लार्ज सोलेनॉइड, तो सेकंड नंबर के लिए म्यू नॉट N2 I2। देखो इधर था म्यू नॉट N1 I1 बिकॉज ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, हियर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेकंड सोलेनॉइड इज इक्वल टू M1 to I2, I2 कैंसल, सो M1 2 का मैं फॉर्मूला लिखूं म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N1 N2 L। This is equation number 2. Equation number 1, check it, this both equations same, so I can write from equation number 1 and equation number 2 M12 is equal to M21, इसको commonly M कहा जाता है। This is you can see that the most timely point we have discussed, यानी कि कोई नंबर 1 में से करंट पास करवाओ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्रोड्यूस सेकंड में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेटअप होगा सेकंड में। मगर इससे उल्टा अगर करंट सेकंड में से पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा फर्स्ट में। कोई फर्क ना पड़े राम को या रहे, सब एक है। यू कैन सी एंड दिस एंटायर थियरम व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज यू कैन सी दैट मैथमेटिकल फॉर्म व्हाटएवर वी हैव डिराइव्ड, इट इज कॉल्ड सिंपली रेसिप्रोसिटरी, यू कैन सी दैट थियरम, reciprocity theorem, it is called reciprocity theorem, most IMP, and this is the mathematical form of this reciprocity theorem. As per reciprocity theorem, mutual inductance of the system of two coils remain same, either current flows through first coil or second coil, you can see super। तो ये एक न्यूमेरिकल था ओल्ड सिलेबस में, मगर एनसीईआरटी में एज अ थियरी दी है, और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू डिराइव दिस 2 पॉइंट्स, वेरी इजी। इसमें कोई रट्टेबाजी करनी नहीं है। मैं एक पार्ट सिखाता हूँ वापस। सबसे पहले अपन लोग ने कंसीडर किया जो ये ब्लैक कलर का सोलेनॉइड नंबर 1 है, उसमें से I1 करंट फ्लो होता है। तो फर्स्ट कोड सोलेनॉइड में से, ब्लैक कलर सोलेनॉइड में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे कि आग की लपटें, तो इधर जो आग लगेगी उसकी लपटें सेकंड को भी मिलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो सेकंड के साथ एसोसिएट होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड सोलेनॉइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स N2 phi 2, एक का phi 2, मगर सेकंड सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, सो N2 phi 2। ओके फ्रेंड्स, तो इतना फ्लक्स एसोसिएट हुआ, मगर हम तो जानते हैं फ्लक्स का जो भी दारोमदार है वो करंट के ऊपर है। करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो दैट्स व्हाई N2 phi 2 is directly proportional to I1। And now if you remove this proportionality sign, it is called M21। It is the mutual inductance of system of two coils। It is also called mutual inductance of second solenoid with respect to first solenoid। यानी करंट पास हो रहा है फर्स्ट में से, फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है सेकंड में। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला इसके ऊपर से डिराइव किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये आ गया देखो N2 की जगह N2L। अब फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मगर अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड सोलेनॉइड का फ्लक्स फाइंड करना है, तो सेकंड सोलेनॉइड का एरिया लिया A2। मगर ये न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन में या म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अगर कोई हैरान परेशान करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड सोलेनॉइड के साथ एसोसिएट हो रहा है।
एसोसिएट, मगर उसको मेन प्रोड्यूस करने वाला बंदा है फर्स्ट सोलेनोइड, क्योंकि इस करंट फर्स्ट सोलेनोइड में से पास हो रहा है इसलिए B1, ओके, और M21I1 उसके बाद तो फॉर्मूला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1? B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, इट इज म्यू नॉट NI1, यू कैन सी, एंड लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन आंसर। इधर इससे उल्टा करना है, करंट फ्लो करवाना है सेकंड सोलेनोइड में, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा फर्स्ट में, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सुपर, जस्ट चेक इट एंड देन वी थिंक अबाउट फ्यू मोर। ओके, अब अपन लोग इसके रिलेटेड बेस्ट जिसे कह सकते हैं एकदम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि मैंने बोला ये जो पोर्शन है वो वाकई ही धूम मचाने वाला है। तो मैं जो न्यूमेरिकल कहने जा रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए जोरदार है क्योंकि वो वैल्यू इसलिए बनाता है क्योंकि ऑलरेडी वो आईआईटी में पूछा हुआ है। और अब देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ और उसके जैसा आपको अभी सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, कीप नोट, पेन, calci and sharp mind with you whenever you are dealing with this video lecture, then don't forget. Okay, now ओके, सो अपन लोग फाइनल एक हम लगा देता कि मस्त रेडी हो जाए सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, नाउ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। अब दिस टाइप ऑफ टू circular loops given, this is loop number 1 and there is, you can see that loop number 2 or loop number 1 and 2, they both are concentric, you can see. Okay, radius of inner loop it is small r and radius of outer loop it is capital R. current passing through outer loop it is I. current देखो outer loop में से पास किया जाता है, if current is passing through outer loop I, then find the mutual inductance of the system of two coils. This is your question, find mutual inductance of system of these two loops. And here one condition given here, the radius of outer loop is double greater than the radius of inner loop. ये मोस्ट आईएमपी। तो मैं सोल्व करवाता हूँ बिल्कुल इसके जैसा, आपको ट्राई करना है। First of all, for this type of numerical, whenever you are dealing with word like mutual inductance, then always think about numbering 1 or 2. Suppose इसको मैं कह देता हूँ, inner loop को कह देता हूँ loop number 1 and outer loop is considered loop number 2. So current passing through outer loop it is I2. और इसमें करंट पास होगा तो ऑब्वियसली ये जो इनर लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा, क्योंकि इधर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ। सो हियर वी विल स्टार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इनर लूप, और लूप नंबर 1 भी लिख सकते हो, डोंट वरी, इनर लूप इट इज 5-1। सबसे पहले जो पूछा है वो आप वहां से शुरू करो तो भी चले। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू लूप्स, किस में से करंट पास हो रहा है, जस्ट चेक इट, 2 में से। फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 1। ऑलवेज जिसके साथ फ्लक्स एसोसिएट हो पहले अपन लोग वो लिखेंगे M1, और करंट जिसमें से पास होता है वो बाद में 1, 2। It is called mutual inductance of inner loop with respect to outer loop, or it is also called mutual inductance of system of two loops. फॉर्मूला क्या होगा, चलो M12, तो अपन लोग तो जानते हैं फॉर्मूला भी डिराइव किया था, फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद इनर लूप, तो इट इज, यू कैन सी दैट 5-1। कोई बोले सर N1, here only one number of turns, so there is no requirement of N1 अपॉन करंट पासिंग थ्रू सेकंड कोइल। ऐसा ना पता चले तो धीरे से इधर ऐसा लिख देने का 5-1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
I2 and if you remove proportionality sign then M12. अगर ये पता चली जाए here current passing through second loop and magnetic flux associated with first loop. Okay friends, this is your equation, but एक कदम आगे बढ़े. What do you mean by phi1? So here phi1 is the magnetic flux associated after this statement, magnetic flux associated with inner loop phi1. तो phi1 पता चल गया, but what is the formula of flux? Check it. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया ऑफ इनर लूप यानी A1, मगर इधर B1 नहीं लिखेंगे बिकॉज व्हाटएवर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इनर लूप इट इज ड्यू टू आउटर लूप. इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सेकंड लूप, सो हियर B2 मोस्ट IMP. तो अपन लोग के पास फॉर्मूला मिल गया M21, it is A1 B2 upon I2. This is your equation number 1. अब अपने को B2 मिल जाए तो न्यूमेरिकल पूरा, क्योंकि एरिया तो अपन लोग इनर लूप का फाइंड कर ही लेंगे. A1 का मतलब है एरिया ऑफ इनर लूप, नो प्रॉब्लम. B2, what is the meaning of B2? B2 is the magnetic field due to this outer loop. मगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इधर एक्चुअली कैसे एसोसिएट होगा वो फाइंड करना है. सेकंड लूप में से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो फर्स्ट लूप के साथ कैसे एसोसिएट होगा. अब ये स्टेटमेंट काम में आने वाला है मोस्ट टाइम पे. अल्टीमेटली ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा. देखो ये है अर्थ, पूरी अर्थ अपन लोग जिसको पृथ्वी कहते हो, और ये है जिसे कह सकते हैं आपका घर. अब आपका घर इतना अर्थ के सामने तो आपका घर का इतना भी नाम आप जानते हो, बहुत ही जिसे कह सकते हैं माइनर डॉट है ऐसा. तो इधर भी ऐसा केस है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हियर r is double greater than small r. Whatever the you can see that inner loop it is considered as a center of outer loop. ये रेडियस इतनी कम है, इसके कारण ये जो एरिया होगा वो बहुत ही कम होगा इस एरिया की कंपैरिजन में. मतलब सेकंड लूप है उसकी कंपैरिजन में इनर लूप तो एक छोटा सा डॉट होगा, आई कैन से द सेंटर. तो अपन लोग ऐसा लिखेंगे, देखो इधर से मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसी के कारण ये जोरदार is r double greater than small r inner loop simply becomes like center of outer loop, you can see. तो अब ये डायग्राम है, ये अपन लोग बनाए. देखो ये आउटर लूप है, ये इनर लूप. देखो तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आउटर लूप एट इनर लूप. अब एट इनर लूप दैट मींस एट द सेंटर. तो अपने को आउटर लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे. सो अपन लोग लिखें मींस B2 का मतलब होगा B2 दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड due to outer loop but at its center, you can see magnetic field due to outer loop at its center. Center मतलब inner loop हो गया. देखो this is inner loop because of this reason. ये अर्थ और आपका घर. So what is the formula of magnetic field due to current carrying loop or at the center? So it is mu naught current I2 upon 2 into radius. रेडियस कितनी आउटर लूप की, इट इज कैपिटल R. तो यहाँ गया B2. अब B2 इधर यूज कर देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स A1 इज द एरिया ऑफ इनर लूप. इनर लूप का रेडियस स्मॉल r है. देखो सो आई कैन राइट पाई r स्क्वायर. A1 इज द एरिया ऑफ इनर लूप. B2 ऑलरेडी वी हैव फाउंड mu naught I2 upon 2 into radius upon capital I2 अलविदा. So M21 is equal to mu pi r square upon 2r. This is the most IMP formula और shortcut भी बनेगा फ्यूचर के लिए. Don't forget this is called simply the mutual inductance of the system of two loops particularly for this condition. ये condition के बिना किसी के बाप की ताकत नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना, क्योंकि एरिया फाइंड नहीं कर सकते. मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ही मुश्किल है. ये रीजन को हमने सेंटर के तौर पे लिया
क्योंकि इसने ऐसा कंडीशन दिया, दैट्स व्हाई। सो मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस टू कॉइल्स। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही एमपी। अब इसके रिलेटेड इधर में एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये IIT 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देयर इज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ऑफ लेंथ कैपिटल L and at the center there is another, we can say that this type of small loop having length of side small l, current passing through outer loop. Find the mutual inductance of the system of these two loops. इधर circular loop थी, इधर square loop दिया है, check it, apply your logic. Reference already with you. So आपने ट्राई की होगी, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अपन लोग आंसर इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया ऑलरेडी IIT में पूछा हुआ, हाउ कैन वी सॉल्व इट। दिस इज योर, यू कैन सी दैट आउटर लूप, इसको कह देते हैं लूप नंबर 2, इनर लूप इट इज लूप नंबर 1। So we would like to find mutual inductance of system of two loops, it is M12, current pass हो रहा है second में से, it is I2, तो फ्लक्स एसोसिएट होगा फर्स्ट के साथ, it is phi1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला फेंका phi1 upon I2, phi1 का मतलब होगा A1 B2, A1 is the area of inner loop, B2 is the magnetic field at inner loop because of outer loop। B2 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटर लूप है, तो अपन लोग ने फॉर्मूला बना लिया। अब हमें A1 मतलब एरिया ऑफ इनर लूप, वो तो मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर का एरिया फाइंड करना इजी। B2, दिस इज द मोस्ट टाइम पॉइंट, B2 का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इनर लूप ड्यू टू दिस आउटर लूप। मगर इधर भी एक कंडीशन दी है, L डबल ग्रेटर देन स्मॉल l, ये कंडीशन चाहिए। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि ये जो पोर्शन है वो तो उसके सामने बन जाएगा वापस सेंटर। दिस इज योर इनर लूप, देखो ऐसा। तो ये जो स्क्वायर है वो आउटर लूप है, ये जो डॉट है वो इनर लूप है। तो आउटर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इनर लूप पे फाइंड करना, मतलब सेंटर पे फाइंड करना। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर कॉइल एट इट्स सेंटर। तो अपन लोग B2 का शॉर्टकट अप्लाई करें, इसका लेंथ ऑफ साइड है, ये शॉर्टकट मैंने आपको दिया है, म्यू नॉट साइन n है, साइन पाई बाय n tan पाई बाय n अपॉन पाई इनटू लेंथ ऑफ साइड। मोस्ट टाइम ये तो झबाच शॉर्टकट जबरदस्त। व्हाट डू यू मीन बाय n? n रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ साइड्स 4, सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n की जगह 4। करंट कितना पास हो रहा है आउटर लूप में से? I2, जस्ट चेक इट, I2 sin पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 अपॉन पाई लेंथ ऑफ साइड है l, जस्ट चेक इट, लेंथ ऑफ साइड l। तो इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। सो B2 म्यू नॉट इनटू 4 इनटू I2 sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 tan पाई बाय 4 1 पाई इनटू लेंथ। तो 4 को स्प्लिट करो 2 इनटू 2, तो 2 को भी स्प्लिट करो तो 2 इनटू रूट 2, 4 की जगह 2 इनटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो एक एक रूट 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट I2 upon pi into L. This is your B2. Now we would like to use here. So what is the area? Area of this inner loop. It is small l square BM21. And B2 already we have found 2 root 2 mu naught I2 upon pi into L, divide by I2. I2 cancel. So what is the final answer? M21 is equal to 2 root 2 mu naught into L square upon pi into L. Super. This is the धूम आंसर है। क्यों धूम? क्योंकि मैंने बोला IIT में पूछा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे थे, एक था टेक्स्ट बुक और एक था आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। ये जो सर्कुलर लूप वाला है वो आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6.3 थर्ड नंबर का इलस्ट्रेशन था। और दोस्तों देखो ये एनसीईआरटी थर्ड नंबर का इलस्ट्रेशन ऑलरेडी पार्ट ऑफ IIT, जस्ट यू कैन सी दैट इन डिफरेंट वे। मगर ये जो फॉर्मूला है वो ये न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
प्लस ऐसे न्यूमेरिकल में कंडीशंस खास याद रखना, विदाउट दिस कंडीशन न्यूमेरिकल यू कैन सी दैट बिकम वेरी टफ और almost I can say that impossible. So friends, we have discussed mutual induction and the concept of mutual inductance. Once again, whenever you are thinking about the system of two coils, then you have to think about the system or concept of mutual induction. What do you mean by mutual induction? Mutual induction, that means you know that very well, if you pass current through any one coil, like here, if you pass current through any one coil and magnetic flux or magnetic induced EMF is obtained in second coil, ये देखो एक कोई सेकंड कोयल में से मैं करंट पास करवा रहा हूँ और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहा हूँ फर्स्ट कोयल में, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. बट दिस इज यू कैन सी दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की. मैं दोनों डेफिनेशन वापस एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में इसके आने के चांस है. म्यूचुअल इंडक्शन का फर्स्ट डेफिनेशन, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स associated with any one coil per unit current passing through other coil, it is called mutual inductance of the system of two coils. और दूसरा फॉर्मूला याद करो, M21 it is epsilon upon di by dt. That means induced EMF produced in any one coil per unit rate of change of current in other coil, it is called mutual inductance of the system of two coils. But don't forget M21 or M12 both are same. Already we have proved because of reciprocity theorem. Mutual inductance depends upon few factors, number of turns, common large area. You can see the large common area here. This is, you can see that area, and then you know that very well, relative orientation, relative distance, or I can say the separation, and the region on which this type of coil is wound, especially high permeability material we have to select. तो ये सभी पॉइंट्स आईएमपी है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका यूनिट हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये था कोई नाश्ता लेके आए और हम उड़ाए, या हम नाश्ता लेके आए और कोई दूसरा उड़ाए. इसके बाद का टॉपिक है हम ही नाश्ता लेके जाएंगे और हम ही खुद करेंगे, यानी कि सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, जो एक जोरदार बंदे को इंट्रोड्यूस करने जाने वाला है, इंडक्टर. Okay friends, so next part spring, obviously this is also very IMP, so next time we'll discuss part number 6. Okay, be safe and be hard worker.